কথাটো হৈছে এনেকুৱা, মই সিদিনা কথা কৈ আছিলোঁ, হ'লেও ভলিউমটো কম কাৰণে মই বেছি কথা নক'লোঁ। মোৰো গাটো অকণমান বেয়াই, চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে। তো আমাৰ দেউতাৰ গাটো অকণমান বেয়া, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ এটা সেইদিনাখন আমাৰ মানে দেউতাৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি সেইদিনা নামঘৰত ৰাজহুৱা এখন শৰাই দিছিল আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰা এখন শৰাই দিছিলোঁ। তো তাতে নামঘৰতে ভিডিঅ'টো অকণমান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু নামঘৰৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে চাই গৈ থাককচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো। মাজে মাজে মই কৈ থাকিম কি কি হৈছে কি কি নহৈছে, ইয়াতে সকলোৱে লগ হৈছে, তেতিয়াহ'লে চাই গৈ থাকক। দেউতা ধুনীয়াকৈ বহি আছে। তাতে সেইদিনা চেন্নাইৰ পৰা আহিছিল, মানে আমি উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে চেন্নাইলৈ নিছিলে দাদাহঁতে। আমি মানে ঘৰৰ মানে সিদ্ধান্ত মৰ্মে আৰু সেইদিনা চেন্নাইৰ পৰা আহি পাইছিল। তাৰপিছত আহি পোৱাৰ পাছতে মানে আমাৰ ৰাজহুৱাকৈ নামঘৰত এখন শৰাই দিছিল আৰু আমি ঘৰৰ পৰা এখন দিছিলোঁ। তেতিয়াহ'লে চাই গৈ থাকচোন। মই নামঘৰ সেইদিনা পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াতে পেহীহঁত চবেই বহি আছে আৰু দেউতাৰ লগৰ যিসকল শিক্ষক তেওঁলোকো আহিছিল। তেতিয়াহ'লে চাই গৈ থাকক। এয়া আমাৰ টিকলি আছে মামাহঁতৰ ঘৰত। পিটিখা মাজে মাজে মোৰ ব্লগত ওলাই থাকে, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু তেতিয়াহ'লে তাই আছে আৰু বাকী সকলো আছোঁ আমি। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। সকলোৱে দেউতাৰ হৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ভগৱানক। তেতিয়াহ'লে চাই থাকচোন। মই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিমান পাৰি সিমান। সকলোৱে সেৱা কৰিছে, চাই থাকক। কেইটিমান ফল মূল লৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ এইটো শৰাই আগবঢ়াবৰ কাৰণে। এইটো হ'ল আমাৰ বৰুণ ৰাজুৱাৰ আৰু অজিত মালদেৱে আৰু মই আগভাগ লৈ মানে আমাৰ যিসকল শিক্ষকবৃন্দই বুলিয়ে নহয়, আমাৰ বসন্ত ৰাজুৱাৰে আজি কেইদিনমান আগত নাজানো ভগৱানৰ কি মহিমা, তেওঁ চিকিৎসাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ গৈছিলে আৰু আজি তেখেতে আমাৰ মাজত সুস্থ শৰীৰে ঘূৰি আহিছে। তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আমি কামনা কৰিছিলোঁ যে তেওঁ ভালে ভালে ঘূৰি আহক। আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ অজিত মালদেৱে বিশেষকৈ তেওঁ মানে আজি কেইদিনৰ পৰা মোক বৰুণক কুটৰি থকাৰ কাৰণে আমি ভাবিলোঁ নহয় এইটোতো বৰ ভাল কথা, যিহেতু ভগৱন্তৰ বাহিৰে আৰু এই পৃথিৱীত কোন আছে, আমাক তেওঁৱে চলাই লৈ গৈছে। গতিকে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ, দাদা হওক, জ্যেষ্ঠজন হওক, আই মাতৃ হওক, যিসকল আমাৰ এই বসন্ত ৰাজুৱাৰ একদম ট্ৰাষ্টত থকা, আজি বহুতকে কৈছিলোঁ, হয়তো বিভিন্ন অসুবিধাৰ কাৰণে হয়তো কিছু আহিও নাই পোৱা। গতিকে আমি তেখেতৰ হৈ আজি এই নামঘৰত কেইটিমান ফল মূল ধূপ অৰিহণা দি পেলাই আমি ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে ভগৱন্তই তেওঁক সুস্থ শৰীৰে ঘূৰাই আনিলে আৰু আগন্তুক দিনকেইটা যাতে ভালে কুশলে ৰাখে, তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আমি এই নামঘৰত আমি একগোট হৈছোঁ। আই মাতৃ আৰু মোৰ ভাই দাদা আৰু ভক্ত প্ৰেমী আৰু মোৰ গুৰুবৃন্দ ৰাইজ, আজি আমি এই টমটমতলা নামঘৰত সমবেত হৈছোঁ ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত। আমাৰ গাতে লাগি থকা, সদায় কাষতে পাই থকা এই টমটমতলা সৰ্বগ্ৰহী এজন ব্যক্তি, তেওঁ হৈছে বসন্ত ৰাজুৱাৰ। কিছুদিনৰ আগৰ পৰাই তেওঁ অসুখত ভুগিছে আৰু আজি যে আহি পাব বুলি আমাৰ কাষত আমি ভবা নাছিলোঁ। ভগৱন্তৰ কি মহিমা, আজি আমাৰ তেখেতৰ নিশ্চয় কিবা এটা ৰোগে দেখা দিছে। সেই ৰোগ চিকিৎসকে হয়তো ধৰা পেলাব পাৰিছে নোৱাৰিছে, আমি সেইখিনি বিৱৰণ আমি হয়তো নাজানিছোঁ। কিন্তু যাই নহওক লাগিলে ভগৱন্তৰ বাহিৰে আৰু কোনো উপায় নাই, তেওঁৱে চব কৰিব পাৰে। আমি সেয়ে ভগৱন্তৰ চৰণত আহিছোঁ। ভগৱন্তক সাক্ষী কৰি আমি শৰাই ভাগি আগবঢ়াইছোঁ, যাতে যিয়ে নহওক, যেনেধৰণেই হওক, ভগৱন্তই তেওঁক সুমতি দিয়ক, সুস্থ কৰক, আকৌ আমাৰ লগত থাকি কাম কৰাৰ উদ্যম দিয়ক। তাকে আমি ভগৱানৰ শ্ৰী চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাবৰ বাবে আজি সমবেত হৈছোঁ। আৰু মোৰ বন্ধুবৰ্গসকলকো, আই মাতৃসকলকো আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। তেওঁলোকো আমাৰ লগতে
অকণমান হাতৰ উজান দি ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ ল'বৰ বাবে আমাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকো আমাক সহযোগ কৰিব বুলি আশা ৰাখি আজি শৰাই বাঢ়ি ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত আগবঢ়াইছোঁ। কৃষ্ণ ভাল বোলে নমো নমো নারায়ণ প্রপন্ন হোক হরি গরিব মায়ের নিজান अपना महिमा अपने रेकॉर्ड करे जीवत करे परित्राण ভাল আজি বিহুৰ দিনা আমি কন্দমূলা নামঘৰত আমাৰ এই টনটনৰ নামঘৰৰে সেৱক বসন্ত ৰাজৰ দেৱৰ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে আমি আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সমূহ সদস্যবৃন্দ তথা আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা লখিমপুৰ বাঁহবাৰী নিগিৰি পুখুৰী গেলেকী বিহুবৰ আৰু নাজিৰা অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰে আজি ভক্তবৃন্দ ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমি এই ভগৱানৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ যে আমাৰ গাতে লাগি থকা বসন্ত ৰাজুৱাৰে যাতে সুস্থ হৈ উঠক। এই নিমিত্তে আমি আজি কেইটিমান ধূপ দীপ অৰিহণা আৰু কেইটিমান ফল মূলেৰে তথা ভগৱন্ত বসন্ত ৰাজুৱাৰে পৰিয়ালবৰ্গও ইয়াত এখনি শৰাই আগবঢ়াইছে। এই শৰাইখনি আগবঢ়াওঁতে অনেক ত্ৰুটি বিচ্যুতি হ'ব পাৰে, গতিকে সকলো যাতে ভগৱানে নিজ জীৱন গুণে ক্ষমা কৰি আমাক আগলৈ যেনে তেখেতৰ নাম গুণানুকীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে আমাক আশীৰ্বাদ কৰে আৰু আমি যি উদ্দেশ্যে আজি বসন্ত ৰাজুৱাৰ যাতে পুনৰ সুস্থ হৈ আমাৰ মাজতে সোনকালে আৰোগ্য হওক তাৰে আপোনাৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ আৰু আমি সমাজসকলে যাতে সুস্থ সমাজ এখন গঢ়ি তোলক তাৰ কাৰণে আপোনাৰ চৰণত সেৱা জনাইছোঁ আৰু এটি ঘোষাৰে আমি अपना ওরকম लेके भागवत लेके सूत मुनि सनक मुनि आदि के 88,000 ऋषि मुनि माजे सुना हुआ नहीं सनक मुनि सूत मुनि गति तो हस्तवेद जाने हैं गति के हमने के धर्म बारे हमने किछु শিখা তো সুতমণি অর্ধেককে যে ভাগবতটা কীরকম আলো ওটার বিষয়ে সুতমণিয়ে বলল যে ব্যাসদেবে आश्रम में बैठ के बहुत चिंतित रहो। नारद मुनि बैठा लो बैठा के जगह हमने आलही आले हमने निजे खा खबर ली সেরকমে খাখর নেওয়ানে নারদে বললো আমার তো ভালোই हैं তো বিয়াককে বললো তোর কিরকম খবর তো বিয়াক বললো ভাই আমার তো খবর বড় ভাল না আমি বড় মানসিক টেনশন ভুগল তখন নারদ মুনিয়ে बोले তুই তো इतना वेद शास्त्र लिखले फिर भी तो मानसिक अशांति पाए रहे तो बोला हाँ वो बात का तो बोला तो सही लगा हम तो 4 वेद 14 शास्त्र 17 पुराण भागवत का लेके आधार पुराण तो ये 17 पुराण लिखा है कितना लिखा सत्तो हम मानसिक अशांति हम बुझे ना तखन नारद बोलो देख व्याक तो जितना लिख ले सब तो पूजा पातल देव देवता गला के प्राधान्य दे हमने जो पृथ्वी जो सृष्टि कर लो मालिक ओकरा पे बहुत थान नहीं दे हाँ तो जान गला पुथी लिखला जे हमने पूजा पातल मंदिर हो दुर्गा पूजा काली पूजा हर रकम तो 17टा पुराण में गोटेटा पूजा पातल के प्राधान्य देव और नीति मते के
कितना तो लिख दिले एखन उखलाक तो तुम मेटाइल नहीं पाबो जेटा निकल गेलो एखन पुनः तो भगवान के प्राधान्य दे के तो शास्त्र तबे याके गणेश के सहाय लेके श्रीमद भागवत लिखे ये भागवत श्रीमद भागवत लिखे श्रीमद भागवत लेके 17 এটা लेखा ते भागवते व्यासदेव लिखलो लिख के फिर वो चिंतित में ही तखन फिर नारद आके बोले एखन की तो हम तो भागवत लिखली से भागवत के व्याख्या के तानी जे बहुत किटी के वो खातिर आगे के आदमी बोलो पगला होगा गीता पढ़ले मन पगला होगा भागवत में एक्चुअली गमे अध्ययन के जेता पाली बहुत किटी के ओकर भांगनी गला निकला गई तो बुझवाने उल्टा पुल्टा करबे तो भाल की होते बे तो व्यास देव हटे बोलो है नारद के जे एखन व्याख्या कर एक लगे हम तो लिख दिली जनता हमारे आत्मा ने ज्ञान दिलो भगवान ने वो ज्ञान मत हमारे कलम चलने गेलो हम लिखली पीछे ओकर व्याख्या का ठीक तबे फिर हम समूह से बोल दिए तुम बोलो बुझेले तुम्हारो नारदे शिव लोग गए कैलाश से समय शिव ब्रह्मा लोग जाए उस समय पार्वती एकले रहे ती जाके पार्वती दिलो उल्टा सीधा बोल ता नारद थोड़ा कजिया लगा बीत के लगे इटा उटा चुगली बोलो चुगली माने सब पार्वती जाए पूछलो बोल हाँ हमारे भोला बाबा संग बहुत भाव है एकदम अंतरंग ही तो वो तो अंतरंग भाव पा तो बोले हाँ तो बोले ठीक है तो कहे अंतरंग से भाले पा तू मुंडन गला किला उपिंद्र अनुटा के करला ता पूछू जे हजार बछर तो पैसा बैठ जा तू केकरा ध्यान करो यदि तोके भाल पा तखन पार्वती को कन्फ्यूज लग गया तो भोला बाबा जखन आलय तखन ई सबके दू जन के मजे खेली मेली तखन शिवे बोले कि है अनकाली तू जब दुबार देखा नहीं देखा तखन पार्वती बोले तो हम से छुपा है तो हम तो तोर से कोनो नहीं छुपा है तो बोले नहीं तो ये गला किला तखन बोले गला सब तोरे लगे तो बोले हमार लगे तो हाँ तो कितना बार मरले कितना बार जिंदा हले कितना बार मरले तो मुंडन गला भाई और हम तो नहीं मर तो बोले तो ही नहीं मरले हम मरले हाँ तो हमार कथा नहीं सुनिए तो भागवत नहीं सुनिए भगवान के नाम गुण नहीं सुनिए और हम सुनी तो बोले ठीक है बात सुनिए तो मैंने ओकरा के बाद देखा लगलो पार्वती का मतलब भूत से नहीं बोलिए वो मन दे नहीं सुने एखनो यहाँ भागवत हानि बतियाए यदि आनी मन दे नहीं सुने आनी बात तक बुझल ना तो पार्वती उनको बुझल ना था तो लगलो सुना गाने शांतिपूर्ण भाव हमार से तो बेसी भागवत पढ़ाई दिलो तो निजान जगह ने सुनाई समय सब साइड कर दिलो हमको भोला बाबा निजर सांप टाप सब बुझाई दिलो और निजान में तो बोले सुने लगे भागवत वह पार्वती सुना हो पार्वती हुंकारी देते देते पार्वती शिव के कराने घुमाई गल वो समय एक आरो ऊपर दिखे व्याख्या है हो सुत मुनि के जोटा हम खंडानी जोटा कोनी रहो वो कोनीटा से जीव सृष्टि है के पार्वती घुमाई गले तखन कोनीटा से हुंकारी देवे लगे पीछे कोनीटा आगे माने भगवान के धाम में रहो वहाँ से भगवान ओकरा करी जुगे यही गला पृथ्वी ने धर्म प्रसार करेले ओकरा लक्ष्मी माई कथा तो है शिव के कथाटा ये भागवत कथाटा वो कोनीटा से जीव सृष्टि है के सुन लो पार्वती तो घुमाई गए ताले ओकर कथा आदाय तखन शिव देखे पार्वती घुमाई गए तो हुंकारी के हुंकारी देवाटा खोजल पेठा तो भागलो जाके बियाक के अंक रुकलो बियाक के अंक से ओकर परिवार से वह सूत मुनि बियाक के बेटा संतान जन्म पाल वह एखन यहाँ राजा परीक्षित के कथा आई जातो ये राजा परीक्षिते भागवत सुनो है और राजा परीक्षित के हो के एखन हम नहीं सुन रहे तो राजा परीक्षित की हलो वो तो 5 पांडव के हेरिक बेटा है 5 पांडव के नाती अभिमन्यु बेटा ओकर माई नाम उत्तरा के गर्भ न तो
ये अस्वस्थमा मारे देलन वो भगवान रक्षा करलो। तो ओकरे बेटा इसे 5 पांडव के पीछे वहे राजा परीक्षित राजा हलो। राजपाट चलवाने कली के खजाने कली के प्रभाव 5 जगह ने है, वो खोती नारी ने है, माटी के सीमा ने है, और के अन्याय भावे के चोर बदमाश के यदि सोना गुटाल है तो सोना ने कली के शनि के प्रभाव। तो राजा परीक्षित तो धर्म राजा पीछे भीमे जरासंध एक असुर राजा के बोध कर लो। तो असुर राजा के बोध कराने ओकर राज मुकुट मैंने राज जोय कर ले ओकर मुकुट पाई जा तो ओकर मुकुट टाइम के राजभवन में रख लो हले। तो भीम राजा परीक्षित के आजा। तो उस दिन राजा परीक्षित तो की हल तो राजा परीक्षित तो है कली के खोजल जवाने कली के 5 जगह थान दिलो। भगवत वैष्णव आई मात्री हिकु छात्र छात्री शिक्षक बिंदु सकले मिली जिखिनि आमी सराय आगबढ़ाइছো जी मनोबंशारे आमी आगबढ़ाइছো परियालबर्ग आरो आमार शिक्षक सन्ता राइजসকল सकले मिली सरायটো आमी आगबढ़ोৱা কাৰণটো হ'ল भगवन्तক এয়ে আজি আমি শেষ প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যে বসন্ত ৰাজুৱাৰ যি অসুখটো সকলোৱে ভগৱানকে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে ভগৱানে নিজে ক্ষমা কৰি ভগৱন্তে গীতাত অধ্যাত দিছে যে বেমাৰৰ ডাঙৰ বেমাৰটো ময়ে হওঁ অৰ্জুনক বুজাইছে আৰু দৰৱটো ময়ে হওঁ। ভগৱানে যেতিয়া বেমাৰো হয় দৰৱো হয় তো তেওঁৰে কৃপা তেওঁৱে চব জানে কাৰ কি আছে। গতিকে কিবা যদি আমাৰ ভুল ত্ৰুটি হৈছে আমাৰ কিবা অহংকাৰে লম্বন হৈছে আৰু কিবা ত্ৰুটি হৈছে তো ভগৱানে সকলো দুখ মাৰ্জনা কৰি এই পৰিয়ালবৰ্গক ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি এয়ে ভগৱান ওচৰত সামৰণি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ।